Hello and welcome to the Real G podcast. Today we will be talking about the new electoral bond controversy made by the SBI. SBI. यस लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले ज़रा एक बार ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर पता भी तो चलना चाहिए ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तक पहुंचते कैसे हैं. You obviously have an extensive background on it, so please take it हाँ, away. सिक्योरिटीज तो आपने ही पढ़ा है. सिक्योरिटीज तो मैं हैंडल किया है, तो चलो बात करते हैं उसके बारे में. सिक्योरिटीज़ होता क्या है एक्चुअली? सिक्योरिटीज़ हर एक कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे उसके कैपिटल के पार्ट्स होते हैं जो कि कंपनी पब्लिक को भी देती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस को देती है, अलग अलग जनरल बॉडीज़ को देती है ओन करने के लिए, ताकि उनकी ओनरशिप जो हो वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाए और सारा जो फाइनेंसिंग का बर्डन है वो एक एंटिटी के ऊपर ना आए. तो जिस वजह से वो क्राउड फंडिंग के अंडर आ जाती है एंड इसे रेगुलेट करता है सेबी जो सिक्योरिटी. So it's a one size fits all cookie jar. या तो दो टाइप्स के मार्केट होते हैं. एक होता है स्टॉक मार्केट जिस पे हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं, जो आप सेंसेक्स निफ्टी. शेयर से याद आया कि अभी नारायण मूर्ति ने अपने शेयर्स हैं 240 करोड़ वो अपने ग्रैंडसन को ट्रांसफर किए हैं. हाँ, मैंने भी कल देखी थी. वो 4 महीने का बच्चा 240 करोड़ करेगा. He is the youngest millionaire in India by the way now. भाई एंड सिंस दीज आर स्टॉक्स तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी Obviously. डिपेंडिंग, बिकॉज इट्स नारायण मूर्ति, ही इज अ स्टॉक ट्रेडिंग मोगल. तो भाई अगर उन्होंने वो स्टॉक्स खरीदे हैं दे डेफिनेटली गोना गो अप. आर्यन मैं आपके फ्यूचर किड का गॉडफादर बन सकता हूँ. तो आर्यन प्लीज. आर्यन I would be grateful. आपने स्टॉक में कभी इन्वेस्ट किया है? मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था एंड द लास्ट टाइम आई डैबल्ड इन दिस इंडस्ट्री वाज इन 2020. But it's also fun to notice that the newest conglomerate, or in this case, the stock conglomerate, might choke on his milk. Well, Aryan is the securities expert here, so I won't call myself an expert. I just have some experience in that area. I wouldn't call myself तो an आपको expert. क्या प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? हाइंडसाइट में अगर देखा जाए तो मैंने बहुत बड़ा ही एल ले लिया था. तो लॉस तो टाइम का हुआ था आर्यन. लॉस टाइम का भी हुआ था एंड मैंने तो नहीं, बहुत ही resources का भी. प्रीमेच्योरली अपने स्टॉक्स को सेल कर दिया था. मैं स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एंड पास मैंने आपको आई गेस आई रिमेंबर शोइंग यू द चार्ट्स. ऑल इन ऑल आई थिंक आई वॉकड आउट ऑन एंड 1200% प्रॉफिट. कोई नहीं आर्यन, happens to the best of It us. happens to the best of us. Only I am not the best of us. Yes. I would say it was a learning curve. It was a learning curve, quite literally, because वो curve नीचे जा रहा था. अब Exactly. चिट-चैट तो बहुत हो गया है. मुद्दे की बात पे आ जाए. तो जैसा मैं कह रहा था कि दो टाइप्स के मार्केट होते हैं. एक होता है स्टॉक मार्केट जहाँ पे हम शेयर्स खरीदते हैं, और दूसरा आता है वो स्टॉक मार्केट है, वो सिर्फ बेसिकली प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए होता है. दूसरा होता है मनी मार्केट. मनी मार्केट जो है यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़, सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं. एंड जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स हो जाते हैं दूसरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज के, तो वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं. इसी पे उठता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंडिंग आती है वो पहले तो बहुत ही डायरेक्ट होती थी. उसके बाद से इसे थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, ताकि थोड़ा लेजिटिमेट बना दिया जाए, जो कि है नहीं. तो It's because anonymity plays a very key factor in this. यस बट है ना, क्योंकि but कोई since- उन्हें कुछ कर सकता है इसलिए उनका हाँ. नाम छुपा देते. बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स उस एनोनिमिटी को अलग कर देते हैं. तो वो एनोनिमिटी अब उस चीज़ का पार्ट है ही नहीं. सिंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की या फिर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके रेगुलेशंस, इनके लॉज जो हैं बहुत ही एक्सटेंसिव हैं. तो उसमें एक लॉ आता है विच इज़ दी ICDR. उसमें जो D है स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. तो वो डिस्क्लोजर बहुत ही स्ट्रिक्ट है. बाकियों के मतलब बता दिए. इशू ये तो पता चल गया. ICDR का फुल फॉर्म होता है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. खुश. Might have to write that now. सो उसमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से जितने भी डिटेल्स है कि कौन इसका ओनर है, कितने का ओनर है, कहाँ किस पार्टी में फंडिंग गई है या किस एंटिटी को फंडिंग गई है, उसका पूरा पर्चा चिट्ठा हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास होता है. सिंस ये बहुत ही टाइम से बहुत ही फ्री हैंड मिला हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, SC को, सुप्रीम कोर्ट को ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक इलेक्शंस की वजह से ही, इलेक्शंस के टाइम पे maybe they're trying to do something good. बट ट्राइंग टू डू समथिंग गुड
right around the elections, it's a bit on the nose. Aryan, let's not doubt the SC. They might slap a contempt case on us. अच्छा It's a very convenient bargaining chip. Yes. कंटेम्प्ट ऑफ It's कोर्ट not के even a bargaining chip, Mohammed. मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस तो पतंजलि के ऊपर भी बहुत लगे हैं, लेकिन वो कभी अपनी कोर्ट में कितने भी समन मिले उन्हें, वो कभी गए नहीं. अब तो उसके चेयरमैन और हमारे श्री बाबा रामदेव को भी बुलाया गया है ना. अब देखते हैं वो शो करते हैं नहीं. उन्हें तो डेडलाइन पाइल्स बोल रहे थे. मैं आई गेस मैं डेडलाइन की बात कर रहा था, मैं उनके हेल्थ की बात नहीं कर रहा था. उन्हें डेडलाइन दे रखी है कि एक्चुअली उनके जो लॉयर हैं वो बहुत बिग शॉट लॉयर हैं, तो वो जिसके लिए भी वो डिफेंस करते हैं वो बोल देते हैं कि इन्हें पाइल्स है तो ये मेडिकल रीजन की वजह से नहीं आ सकते. अब कोर्ट भी कितने ही एक्सपार्टे डिसीजंस निकालेगा. एक्सपार्टे का मतलब विदाउट द क्लाइंट बीइंग प्रेजेंट इन कोर्ट. Exactly. तो कितने एक्सपार्टे डिसीजंस निकालेगा. एट अ पॉइंट पार्टी को वहाँ पे होना ज़रूरी है ना. And इस केस का verdict बहुत conveniently elections के बाद ही निकलेगा. हाँ एग्जैक्टली. तो When it won't be needed. बैक ऑन When the damage that needs to be done has been done. बैक ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग फंडिंग के पैटर्न्स दिखे हैं इसमें, बिकॉज Obviously, the हमारी- biggest beneficiary being the, बीजेपी. of course. हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट होल्डर्स भी हैं, बट बीजेपी की जो फंडिंग है वो स्टैंडिंग एट 6,000 करोड़ एंड बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी की वर्सेस फंडिंग एवरीवन एल्स इज 7,000. 7,000 crores for everyone else aggregate, and versus 6,000 crores only for BJP. 1,140 crores came from one company. I can't remember the name of it, but the same company 1 month after purchasing those bonds got a tender for 14,000 crores of 14,000 for crores. of a project, of a Wow. government project. भाई 14,000 crores I worth think of a क्या project. that's north of अडानी $1 ग्रुप की तो बात billion. नहीं कर रहे. नहीं, ये अडानी ग्रुप नहीं था. I don't think अडानी ग्रुप. Guys, let's not name people here. हाँ, let's keep it profesh. We are not We naming names over we here. can say Ababi. Ababi. Ababi Group. So I don't think Ababi Group has been mentioned anywhere in this report, but they do have a hand in this jar, because Adani He's a big player. he's a big supporter of BJP. Yes. But in those reports released by SBI, which I have to say, the SBI was so what do you call it, cagey about these reports. Supreme Court had been summoning the SBI for months. Reluctant Exactly. even. And all of the data that they provided was inadequate. It was inadequate and it was incomplete, and they thought they could get away with it. But Exactly. the Supreme Court noticed, and they have summoned the rest of the report by the end of this month. Yes. Since it's by- March, it's closing. By tomorrow. It's- They by had 21st. ordered SBI to disclose all the data on the electoral bonds by 21st by of March. 21st of March. Bear in mind, ladies and gentlemen, this case has been going on for upwards of 6 months now. And electoral bonds have been going on since Knowing- like, Yes, 2018. But also bear in mind that this is only allowed in India. No other country can do But this. knowing SBI and its history with controversies, they're just going to Exactly. keep extending this deadline. The 21st March can go up to April, even September. I'm glad it wasn't PNB this time. Well. LPNB, that's nostalgic. आपका किस बैंक अकाउंट है? जिसका सर्वर नहीं चलता है. us moment हो गया भाई. Yes, let's call it Getting a BBL. little too personal. BBL. Brazilian Bank Limited. और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, आई गेस. पारस, कितने और प्लेयर्स थे? हमने 7 प्लेयर्स देखे थे इसमें. Aryan, I have the list with me. The biggest one of them all, headed by Santiago Martin. We read about that. Martin, yes. We read about him in class like 2 days ago. Was it the guy with the lottery schemes? Yes, Yes. Future Gaming and Hotel Services. Yep. The funny part that I found was that there was a Pakistani power firm that also benefited, or that was also a player in this, because in 2019, right after the Pulwama attack,
it in electoral bonds, it gave the BJP 95 lakh rupees. Which is very surprising that Pakistani firm is Exactly. investing in BJP. Later on, it turned out that it was a क्या sham, बात and कर रहे a guy called Ravi Arora, who was known as Ravi Mishra, was operating it right here from Delhi. That's That is so confusing and so sad. and I think recently I read a report about a honey trap conducted by Pakistani agencies, where a woman impersonating an Indian woman, a Pakistani agent was pretending to be an Indian woman, and she call it extortion. She extorted about 25 sketches of submarines and underwater missiles, the sketches of those from an Indian naval officer, and that naval officer has been as of Dishonorably right now discharged. he has been apprehended. Oh, And, okay. So he was he's- also a part of it. No, he has been apprehended because he has broken laws. Even if the person that was extorting this information was not from India, that's classified information. You're not Obviously. supposed to leak that. Exactly. You're not even supposed to tell that to your wife and kids. Exactly, and he sent those 25 sketches to that woman, the alleged Pakistani agent, for 2,000 rupees. She sent him 2,000 rupees, well, on a wire transfer. I think it was UPI she was using, and he sent 25 sketches of Indian submarines to a Pakistani agency. That's just And वैसे भी, I think in India all of us have a very loose understanding of the definition of classified. well, a lot of things are should be on a need to know basis. My question is, why was a simple naval officer being made aware of these plans? Maybe he had a Why personal did vendetta. he have Who access to all we of don't this? know actually. Well, I mean, we are just speculating. this is a over loose here. chain of command. Obviously, speculating. I see what you did Yeah. there. Aryan, I'm going to tell you this thing. Just don't tell anyone else. आप बोलो बहुत लोग को पता चल जाएगा Because it's classified now. Everyone knows. It's- No, no one knows. That's Because a it's on YouTube. part No of the one knows. gimmick of YouTube is YouTube/DLG News and Media. Whatever. shameless plug-in. well, YouTube is a private community. यहाँ से कोई बात बाहर नहीं जाती है. हाँ. Electoral bonds की तरह. Electoral bonds, we're swaying away. और भी बहुत सारे players थे इसमें. Paras, you had a list. Would you mind reading it? Yes, there was this Mega Engineering and Infrastructure Limited who actually got a 14,400 crore rupees tender for a Thane and Borewali Yes, tunnel project. The one that I mentioned, Megha, that Yes. name was skipped my mind. And this tender was given to them on around May 12th of 2023, and they made like a big donation on 11th of April 2023. And well, they got the fruit of their labor in I would guess July. Yes. Well, that's a bit too convenient for them. Talk And about also- Investing 1140 crores and getting 14,000 crores of jobs in India for well that's talk about riding a stock, हाँ. hmm. भाई हम अपना ही version of Moneyball बना रहे हैं. हम अपना ही version of The Big Short बना रहे हैं. And also, this case of future gaming services, future gaming and hotel services, Yeah. they were actually caught by ED in a 409 crore rupees money laundering case. And right after that, our finance minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, Sitharaman. she went to meet Santiago Martin's son in Chennai on April 5th of 2023. And again, I just said it's very convenient. On a more lighter note, this actually sounds like the sequel to Wolf of Wall Street that is shot in India. I mean, it can be called Dalal Gali Ka Bhediya. दलाल स्ट्रीट का भेड़िया. दलाल गली का भेड़िया. दलाल वर्ड को ऐसे मत यूज करो, पैच कर दो. आजकल कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नहीं तो मैं बता रहा हूँ. दलाल वर्ड को यूज मत करो. Yeah, we use everything that's relevant and trending. So moving on to Elvish Yadav. Elvish Yadav, well, वो तो जेल में है ना. He was apprehended by authorities because he was supplying snake venom in rave parties. That's I mean, that's something that you do at rave parties in Yes, Noida. and Obviously, I don't know. Allegedly,
supplying snake venom to rave parties, not just for money, but also to look cool. Yes, To seem I forgot. Snake venom makes you look cool. Yes, of course. Snake venom makes us look, Now, मेरे It was just 20 ml worth of snake venom though. but it's Was it very potent? expensive. Was it potent enough? 20 to get you ml of high? venom is a lot. 20 ml of like- venom is like, Just clear my question. Does venom get you high? Actually, Aryan, I fun- thought venom kills fun you. fact are- about we are- venom is that venom is only venomous if a snake bites you and it enters your bloodstream directly. If if you- taken in a large amount. if you take it via your mouth or your nasal cavity, it might have the recreational uses that Elvish was exploiting. Guys, we are not on impulsive. Can we please not talk about drugs here? I mean, you started We it, don't- Paras. We don't support the use of drugs here, guys. Sorry, bolo dono. Sorry. Apologies. Yes. Sorry, mummy. Moving on to Sorry. other मेरी साइड टेबल के नीचे नहीं है सांप. organizations that had contributed to BJP's electoral bond fund, and this scheme that they had put on to submit a fees. And there's not just companies. There are also individuals who have been buying electoral bonds for up to 6 crores or even 10 crores. And do you And remember? it's not a substantial Because amount one for... single bond is actually capped at a crore. Yes. It so- can start from as less as 20 rupees to upwards a of crore. a crore. And do you remember while in COVID, we only got Covishield as the default vaccine. Yes. No Covaxin, no Pfizer, nothing. No Moderna also. Why? Because the Serum Institute of India donated 52 crore rupees to the BJP और भी in vaccines 2021. थे Well, भाई। और भी वैक्सीन थे और भी वैक्सीन थे, बट सबसे ज्यादा मुझे क्या तो मिल रही थी कोवैक्सीन इस बार? लगी थी. पर पब्लिक को चाहिए था सबसे ज्यादा स्पुतनिक now you see how लेकिन the rest of us कोविशील्ड मिली live. थी ना ज्यादा. And कोवैक्सीन भी मिल रहे थे after that, कोवैक्सीन बहुत मुश्किल से मिल रहा था. वो सबसे बहुत, I मुश्किल think से मिल रहा था majority इस- लोगों को कोविशील्ड ही सबसे लगा. मुश्किल yes, नहीं majority but- लोगों को कोविशील्ड लगा. but मुझे भी जो- कोविशील्ड लगा. मुझे लोग थे कोवैक्सीन लगा। वो मोस्टली स्पुतनिक ढूंढ रहे थे क्योंकि स्पुतनिक का सक्सेस रेट ज्यादा था शायद से। Sputnik, I found Sputnik was a rocket. नहीं, but it was called the vaccine. Vaccine. The vaccine was Vaccine- called. the vaccine was that's a also bit on the called- nose. Yes, it Sputnik is 5. obviously Quite just like the literally. tip of the rocket. स्पुतनिक V या स्पुतनिक Why 5 is ऐसा it कुछ नाम था। rounded? Why is it not pointy? And after this, after all of this happened, after COVID, the CEO of Serum Institute of India, he purchased London's most expensive mansion in 2023 for 1,446 crore rupees. So 1,446 crore rupees for a house, For a which house. he got because he donated 52 crores to BJP. Another fun fact: the owner of Serum Institute of India, what's his name? Adar Poonawala. He actually owns a real life Batmobile. Okay, Man has taste. but okay, criminal मुलाकात nonetheless. करा दो उनसे। Also in brown nose. Yes, the brown Hulk. So, प्लेयर्स की तो बात कर ली कि इतने सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत ही लाइक बल्क में खरीदे थे. अब पॉडकास्ट हिंदी में शिफ्ट कर देगा इस? कर लेते हैं. कर लेते कोई हैं. बात नहीं. हम तो वैसे भी बाइलिंगुअल हैं. मैं So- तो हिंदी बोल रहा था तब से। आई एम प्राउड ऑफ यू. सो इतने सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत ही बल्क में लाइक 500 करोड़ 1000 करोड़ 1100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉल्स खरीदे. बट क्यों खरीदे? लाइक इनका मोटिव क्या रहा होगा उसके लिए? लाइक इन्हें 100% पक्का तो नहीं था ना कि अगर हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले रहे हैं तो हमें उससे कुछ फ़ायदा होगा. तो मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों लिए होंगे? अरे अगर मुझे आपसे कुछ काम कराना है ना, और अगर आप मेरे से डायरेक्टली पैसे नहीं ले सकते हो फॉर सम रीज़न, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि आप इस आदमी को दे दो और मैं उससे बाद में ले लूँगा, है ना? बिल्कुल. मैंने उस आदमी को दिए, आपने मेरा काम कराया, आपके हाथ में तो पैसे किसी ने देखे नहीं है ना? हाँ, तो ट्रांसफ़र कहाँ हुआ? ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? दैट इज़ द सेम थिंग. अगर And the trail of breadcrumbs is only being kept under a watchful eye by some select organizations, Yeah. the government and SBI, and also it's a and that's why they're withholding their and also document it's a and public their sector data. undertaking. I don't know how the government is controlling it. Is our system
feeling. Is that a question Is that that a needs to be question? I answered? mean, Has that's it- a has very it already rhetorical question. failed, Aaron? So there's I mean, look actually who's at the number one spot. I there's mean, actually a taxation perspective to this. Well, it's a part of the full picture, but as per tax laws, there's a section in deductions. So under section 80 GG and GGB, if you make a donation, however much you make a donation to a political party, उतना अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम में से हट जाता है. सो आपने अगर बीजेपी को पैसे दे दिए, ठीक है, 1100 करोड़ आपके बैलेंस शीट में से जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस हो गया. दैट वुड बी रिगार्डेड एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये आपको डबल बेनिफिट मिलता है. 1100 करोड़ रुपए आपके टैक्सेबल इनकम से भी हट गए, तो टैक्स सेविंग हो गई वहाँ पे. अब उस 1100 करोड़ को इन्वेस्ट करके जो उन्हें फ़ायदा मिला 1400 करोड़ रुपए का, जो 1400 करोड़ रुपए का टेंडर उन्हें मिला, 14,000 ओह सॉरी 14,000 करोड़, 1100 की इन्वेस्टमेंट पे 14,000 करोड़ का टेंडर मिला. 400 करोड़ रुपए का. यस पारस, Aryan is flexing his legal jargon over here. We aren't fluent in it. पढ़ के आए हो. पढ़ के आए हैं हम तो, छोरे मगलू के. ये सब क्या है? शाउट आउट फूसी गैंग. क्या? कौन? सो Fusi. फूसी gang. गैंग. ओह अफान, गाड़ी में किसके गाने सुनते हो आप? सॉरी, रमजान चल रहा है. सो मैं कह रहा था कि 1100 करोड़ रुपए आपने टैक्सेबल इनकम में से भी आपके हट गए, तो टैक्स सेविंग हो गई. पहला फ़ायदा. दूसरा फ़ायदा कि वो जो 1100 करोड़ रुपए आपने दिए, उससे आपको 14,400 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया. पूरा तो क्या आपको लगता है कि आपकी बैलेंस शीट रेड होगी उसकी वजह से? थ्रो अवे मनी. एग्जैक्टली. फेंक दो भाई, अंधा पैसा. अंधा पैसा. फेंक दो पैसा. फेंकेंगे तो नहीं obviously. फेंकेंगे तो नहीं आती है. इंडिया में भाई, इन्वेस्ट करना तो well, पैसा फेंकने के अलावा In terms of around ही elections, हुआ. BJP is like the Max Verstappen. I mean, तोरो भाई बोल दे. हो गया, बहुत देख लिया. पढ़ाई लिखाई करो, बोर्ड्स आ रहे हैं. boards खत्म हो बोर्ड्स गया. खत्म हो गए, सॉरी. बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है फन, उसके लिए पढ़ाई करो. पढ़ाई करो. क्या ये यूट्यूब पे तुम देख रहे हो? रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर. रिजल्ट के लिए पढ़ाई क्या करो. यूट्यूब पे ये तुम देख रहे हो? हम चारों की बात Because है भाई. उसमें भी तुम फायदा उठा सकते हो. क्या पता बीजेपी के अगले इन्वेस्टर तुम ही बन जाओ. क्या पता बीजेपी के मेंबर बन जाओ. अफान, लेट्स नॉट गेट आवर होप्स हाई. क्यों उन्हें प्रोपेगेंडा सिखा रहे हो यार? We are not naming names and pointing fingers. जाओ यार जाओ, कोई Put that down. कोई स्ट्रीम की वीडियोस देखो, जाओ. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हमने बस देख लिया कि टैक्स सेविंग के लिए करते हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट या फिर अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए करते हैं. तो Yes, because obviously who wouldn't want a bad movie? एग्जैक्टली. तो आई बट इन सबका इंसेप्शन होने की ज़रूरत क्या थी? लाइक अगर ये चल रहा था एंड इससे आई डोंट थिंक इससे कोई डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे थे हमारे ऊपर, I mean, बिकॉज political fat cats की pockets are just becoming more deeper. एंड अगर मेगा इंडस्ट्रीज को 14,000 करोड़ का टेंडर मिला, तो उससे तो स्टेट की डेवलपमेंट हो रही है, तो अच्छा ही हो रहा है. लाइक नॉर्मल पब्लिक के लिए अच्छा ही हो रहा है. इनडायरेक्टली अगर पार्टी अच्छा कर रही है तो अच्छा ही हो रहा है. तो Yeah, but it's only Inception- favoring one party. इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या था इसका? अरे दूसरे लोगों को भी तो कमाना है. ठीक है, दूसरे लोगों को कमाना है, बट इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या होगा कि व्हाट इनिशिएटेड दिस प्रोब इनटू एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स? आपको क्या मतलब अचानक से कोई दिमाग की बत्ती जल गई एंड देयर लाइक कि नहीं, इस पे और ज़्यादा हमें स्क्रूटनाइजेशन करने की ज़रूरत है? बिकॉज ये दिस हैज नेवर बीन Because it's a एक्सप्लेन्ड. political and legal loophole that no one has actually explored. एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स मोहम्मद, बिकॉज बिना पॉलिटिक्स के हम यहाँ पे नहीं बैठे होते. Aaron, our judiciary is actually a 14-year-old girl. मैं बोल रहा हूँ, मत देखो ये. No, for a moment, Paras, I thought you were being serious. But the look in your eyes. 14 year, but why 14? Why not 16? Why not 18? अफान, Oddly आप specific, न्यूज़ पढ़ते Paras. हो? हाँ. आप न्यूज़ पढ़ते हो? I think आप आंख बंद करके न्यूज़ पढ़ते हो. हम्म.
कौन सी वाली? वो दरअसल ये बचपन से ऐसे ही वो बचपन का ऑपरेशन। हाँ यस तो भाई भाई- मेरे को मत मारो, मेरा ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले। मैं बचपन से कर रहा हूँ, लोग अब वो काम कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? लोग भी तो आजकल आंख बंद करके ही न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ हम आँख बंद करके अगर जैसे पढ़ते आपके नहीं कैमरा हैं। की भी आंख बंद हो गई एक नहीं बोलना लिटिल टू क्लोज टू गाइस होम. अफान को थोड़ा अटैक करना बंद करते हैं। आँख बंद करके हम पढ़ते अगर नहीं है, आँख बंद करके बिलीव तो कर लेते हैं, बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है न्यूज़ पढ़ते हुए? ये हो गया, क्या ही कर सकते हैं, हर साल Exactly. होता है, क्या हर ही कर इलेक्शन सकते पे हैं। होता है। पैसे खाते ही हैं, मर्डर हो गया, होते रहते ही हैं, पता नहीं। अब हम आँख बंद करके बस कंफर्मिज्म है बहुत ज्यादा On On इंडिया the the की। sur- surface, normalize हो on the चुका है। surface, it's a democracy. मगर if you actually take a deeper look into it, it's actually more like an unreleased version of Mirzapur season 3. आई थिंक वी आर लिविंग इन मिर्जापुर, Exactly. बट इतने अमीर तो वो भी नहीं थे। सही बात है, वो तो फिर भी बस कालीन बेचते थे। These are exactly like the scripts that didn't Don't get forget the accepted. बर्फी. The scripts that the didn't get reality accepted. the reality is like a fan fiction. यस, Exactly. तभी तो अब अग्निपथ जैसी मूवीज नहीं आती। हाँ लेकिन क्रैक जैसी आती है। राजनीति भी बहुत अच्छी मूवी थी. राजनीति भी अच्छी। राजनीति अच्छी मूवी थी, राजनीति बट बहुत अच्छी movie क्रैक थी. क्या थी? I mean, अफान क्या आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे जो आपने हमें It उस was- ऑर्डियल मैंने के थ्रू बिठाया मैंने नहीं था? देखा क्रैक, मैंने नहीं देखा क्रैक। आपने हमें मैंने उस नहीं देखा, ऑर्डियल के थ्रू मैंने नहीं बिठाया देखा था। क्रैक। भाई क्रैक देखते हैं आओ। I mean, it was so good कि अगर तुम आधी मूवी भी देखोगे वो काफी है. हाँ हमने आधी मूवी देखी थी, हम नहीं। हमारे साथ आधे पर थिएटर को लेके वो चले तो गए ठीक थे। है, कुछ लोग बोल रहे थे कि वापस चल के कंप्लीट कर लेते हैं, है ना पारस? गाइस मूवीज के बारे में हम बात ही कर रहे हैं तो हम ऑस्कर्स के बारे में बात कर लेते हैं इस साल के। कैसे I, for one, am really happy that RDJ and Cillian Murphy won Oscars. I for one am really happy that I got to see John Cena naked. सेम। No homo. That was actually a callback to a streaker, to that Which back in I think in the 90s they were hosting the Oscars and a naked streaker just ran across the stage. I don't think कोई कपड़े पहन के स्ट्रीक करता है आर्यन. Stop micromanaging me, Mohammed. With Guys, emphasis मेरे on को attack मत करो, micromanaging. please. Don't say micromanaging, मैं ट्रिगर हो जाऊंगा। हो जा। आपका ADHD ट्रिगर हो जाता है उसे, यस। या procrastination, or the long laundry list of defects you suffer from. आपका क्या टेक है बारबी को? I, for one, haven't actually seen the movie, but the only reason why I would actually see the movie for is Ryan Gosling. Us. I haven't seen it yet, but that song, I'm just kidding. I'm just kidding, yes. Yes, everyone. I think all of us guys I have listened to this. put song. it on repeat while I'm doing They We the also have a dishes. friend named Ken. मैंने Because- देखी Ken- Exactly. फोर्सफुली And there is even a doppelganger of Ken who roams around H block. फोर्सफुली मुझे सुनो फोर्सफुली मुझे बारबी देखनी पड़ी क्योंकि मैं गया था अपनी Yes. Yes, सहेलियों के साथ. गर्लफ्रेंड के साथ। सहेलियों के साथ. Wishful thinking doesn't hurt anyone, Afan. मैंने मूवी देखी, अच्छी लगी मुझे। मूवी देख रहा हूँ ना. हाँ। Of और course. क्या देखते हैं आर्यन? बहुत एक और अच्छी चीज हुई थी. क्रिस्टोफर नोलन गॉट 2 awards. And Ludwig Göransson also got Well, an Oscar. that score was amazing. Obviously, Oh it my was. God. I can still hear those sirens when I sleep. From American Prometheus, and can you hear the Yes. music? Trinity, that violin in Trinity, God. An actual air raid siren was synthesized for that, guys. Fun fact. Christopher Nolan got 2 Oscars. One for Oppenheimer won Best Picture, and Christopher Nolan won Best Director. And I think nothing is Well deserved. more deserving. No one is more Deserving, yeah. deserving. The Oscars got it right this time. Louis Strauss, played by RDJ. RDJ. That was I don't think I have A ever lowly shoe seen- salesman. I have ever seen a role played to perfection. RDJ has been. He has deserved an Oscar. Well, Oscar is just a label, but he has deserved it more than anyone else. Cillian Murphy, I was really happy for him. Well, he looked like a kid in a candy shop when he got the. And RDJ proved that he can play other roles other than Iron Man. Yes, he is not just Tony Iron Stark. Man now. He's a lowly shoe salesman. I'm sorry, just a shoe salesman. Talking about movies, अब स्वतंत्रता वीर सावरकर भी आ रही है कुछ दिनों में। No, I think उसे बहुत backlash मिला है पारस. They are labeling it as propaganda. Alongside You know, because- the other 10 movies that are conveniently releasing during this time frame. Article 370. Article 370.
Yes. There's other like I Mohammed think है ना there's a कश्मीर से. Tamil or Telugu movie that's coming around that also preaches propaganda. I don't remember the name mainly because I can't pronounce it. अयो अन्ना. वेल End करें? तो नारियल इसी किधर? रिलेशन में कि guys shush. But we actually didn't talk about Dune Part 2. Well, the main reason I brushed over it. Well, there goes our camera. The main reason मेरा मोबाइल भी गया होगा. I brushed over Dune Part 2 because I didn't actually watch it. I wanted to for a long time, but going back watching Dune Part 1, I thought it was a bit dragged out. Exactly. And I would understand how you would get offended. Paras Oh no, we aren't especially- offended. Paras especially. Aryan, we are not offended. We are just, fascinated by your logic. Because the first movie is always dragged in a trilogy, Aryan. But after you finish watching Part 2, you will realize that it actually set a very solid Aryan, foundation. जितनी ज़्यादा dragged first है, उससे ज़्यादा कम dragged second है. Well, Lisan al Gaib. Lisan al Gaib. Yes. Lisan al Gaib. Just as it Deep. was written. Just as it was written. बट जैसे हम बात कर रहे थे कि कंट्रोवर्शियल मूवीज जो प्रोपेगेंडा प्रमोट करती हैं वो इलेक्शन से टाइम पे ही आती हैं. तो और हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे. सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वांटिटी कौन सी पार्टी को मिला था? बीजेपी को. Obviously. एंड ये भी पूछ सकता हूँ मैं कि ये जो प्रोपेगेंडा वाली मूवीज हैं ये किसको सपोर्ट करती हैं? I would not know. I would not know. Let's not. Like I said, I we think- aren't pointing fingers and Yes. naming names. Yes, Or it's pointing not- names and naming fingers. वो कैमरा वापस ऑन भी कर सकते हैं. कोई नहीं. We're just using these. Exactly two these two. हाँ. Okay. उसमें think जो इसमें शॉट्स cut लेने थे करने वो की हम ले जरूरत सकते नहीं हैं. now. Well, Dune Part 2. Well, I believe your opinion because you guys have the best taste in movies. So I would watch it. And it But- actually that movie single-handedly changed Paris's opinion on Timothy Chalamet. Well, I love Timothy Chalamet. But Don't you? I still, Of I course still, I do. I still hate Zendaya. Well, She's everywhere, yeah. She's like the one above all, omnipotent. She's like the Akshay Kumar of Hollywood. okay. Nahin, she's like. Would you like to speak about the soundtrack of that movie? I heard it's. I think Obviously, it's Hans spine-chilling. Zimmer was behind it, so obviously it was a good Well, OST. The mentor of Ludwig Göransson. And also, जहाँ पे हमने देखी थी, Paris IMAX PVR, A little on the nose. Nehru Enclave. I mean, isn't Well- that a little self-obsessed Paris कि तुम पारस में ही मूवी देखने गए? मोहम्मद, मैंने टिकट बुक नहीं की थी. तो रैप करते हैं आज का सेशन. Session. अरे रैप करते हैं आज का सेशन. You're watching The Real G's. Thank you. Thank you. Thank you. और नारियल पानी.